Hello everyone, welcome back to Aspirant World. Today I will share one-liners of all the important current affairs for 6th May 2020. So let's start. Center for Monitoring of Indian Economy data stated that the unemployment rate in India has climbed to a staggering 27.1% as of 3rd May 2020. It also stated that over 121.5 million Indians were out of jobs in April due to continuous nationwide lockdown to contain COVID-19. CMIE के आंकड़ों में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर 3 मई 2020 तक 27.1% तक बढ़ गई है. Next. Government of India has nominated Secretary of Economic Affairs, Department Ministry of Finance, Tarun Bajaj as the director on the Central Board of Reserve Bank of India. The nomination of Bajaj is effective from 5th May 2020. Tarun Bajaj is a 1988 batch Haryana cadre IAS officer. भारत सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया है. नेक्स्ट. Uttar Pradesh state government unveiled the Ayush Kavach app that will provide health-related tips and information about Ayurvedic medicines amid the COVID-19 pandemic. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया जो स्वास्थ्य संबंधी युक्तियां प्रदान करेगा और कोविड-19 महामारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देगा. नेक्स्ट. CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology, and Tata Sons signed an MOU for licensing of know-how for FNCA S9 editor-linked uniform detection assay for rapid diagnosis of COVID-19. The license includes the transfer of the knowledge for scaling up the know-how in the form of a kit that can be deployed for COVID-19 testing on grounds in May 2020. CSIR, IGIB और टाटा सन्स ने कोविड-19 के तेजी से डायग्नोसिस के लिए FNCA S9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे के लिए नो हाउ के लाइसेंस के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए. नेक्स्ट. The Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj and Agriculture and Farmers Welfare, Narendra Singh Tomar, launched the Saras collection on the government e-marketplace portal at Krishi Bhavan in New Delhi. केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि भवन में सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया. नेक्स्ट. Defense Research and Development Organization developed UV Blaster, an ultraviolet disinfection tower for rapid and chemical-free disinfection of high infection-prone areas. UV Blaster is a UV-based area sanitizer designed and developed by Laser Science and Technology Center. DRDO ने UV Blaster बनाया है. यह उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के जल्दी और केमिकल मुक्त डिसइंफेक्शन के लिए उपयोग किया जाएगा. नेक्स्ट. IHS Markit India stated that the Manufacturing Purchasing Managers Index of the manufacturing sector activity of the country dropped to a record low of 27.4 after remaining in the growth territory for around 32 consecutive months. IHS Markit India ने कहा कि लगातार 32 महीने तक विकास क्षेत्र में रहने के बाद देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI 27.4 के निचले स्तर तक गिर गई है. नेक्स्ट. Bharat Dynamics Limited, a defense public sector undertaking, has signed an MOU with NOCCA Robotics, an incubated startup of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the large-scale manufacturing of ventilators. The MOU will give a boost to the development of affordable ventilators for COVID-19 treatment. BDL ने NOCCA Robotics के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है जो वेंटिलेटर के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए है. नेक्स्ट. Civil Aviation Ministry and the Directorate General of Civil Aviation have launched the Government Authorization for Relief Using Drones portal. The portal aims to provide fast-track conditional exemption to government agencies for COVID-19 related drone operations. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राहत के लिए गार्ड पोर्टल लॉन्च किया है. नेक्स्ट. The 14th meeting of the high-level group of ministers on COVID-19 was held at Nirman Bhavan, New Delhi. The meeting was held under the chairpersonship of Union Minister of Health and Family Welfare.
कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली के निर्मल भवन में आयोजित की गई। बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। So that's all. Don't forget to give us a thumbs up. If you have any suggestions, post it down below in the comment sections. We will be posting such videos daily. So hit the subscribe button and press the bell icon to never miss any update. You can also get the PDF of one-liners of the entire month from our website. I have attached the link in descriptions. Thanks for watching.